Good morning, everyone. Thank you for joining. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Chita, where is your news today? Sir, I couldn't find any news in अरे लगे सही है today's. सही है सो इधर ही तो है न्यूज़ दो न्यूज़ तो इधर ही है ऑफिस लीजिंग अप 40% मीशो फाइल्स आईपीओ इंडिगो ऑन एबीए क्विक कॉमर्स फेसेस हेडविंड ये न्यूज़ नहीं है आज पिता इज दैट पॉसिबल सर राधिका ready? Yes, sir, just a minute. So guys, so Radhika will be presenting about the 4 conference calls. So she has gone through all the 4 conference calls in the last 4 quarters. I have told you to go for the 4 conference calls so that you will understand actually what has happened in the last 4 quarters. Because whenever we talk about stock market or equity investing, you need to understand that what has happened in let's say 2 or 3 months. See, when we say we are tracking a sector, this is called tracking a sector. अभी उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा नहीं कि लेटेस्ट ही पढ़ना चाहिए बिकॉज मैंने जो ट्रैकर बनाने बोला है एक साल में स्टॉक गिरा है स्टॉक बढ़ा है आई हैव टोल्ड यू टू मेक दैट ट्रैकर सो इन दैट ट्रैकर इफ यू फाइंड सम abnormal things so you should know in what quarter what actually has happened. So when we used to go for interviews at that time they always used to say कि कितने कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़े और कितने हिस्ट्री तक पढ़े कहां से तुम पढ़ना लेट्स से इफ यू रीड 8 conference calls so you know that last दीदी मेरे कमरे में से ईयरफोन देना last 2 years में क्या हुआ so that is why that 8 conference calls is important तो हम करने के वैसा but obviously जब हम रिसर्च करने के तब we should do such kind of things but when you say कि मैं ट्रैक कर अभी 2 साल के कॉन्फ्रेंस 8 conference calls so 8 conference call is not only about one company when you read that 8 conference call of 3 to 4 companies in the same sector you will understand वो sector में क्या चल रहा है and what all these things are helping कि ये सब आगे जाके कैसे काम में आएगा जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं. So this is the importance of reading conference call. When we used to do research, we used to get 15 days to research a company. 15 days in 2 weeks. 2 weeks में भी Saturday Sunday भी आ गया. In that time, because वो result season के बाद एक ही quarter एक ही महीना बचने का. So in that 1 month, we have to come up with a report writing, with conference calls, quarterly updates, जो भी industrial data है, everything we have to come in with a model and a report. तो एक महीने का टाइम मिलने का उसमें से दो weeks was to make the report and 2 weeks was to present that report कि अप्रूव होने का उतना टाइम लगने का फिर you do all cosmetic changes and all. So yeah, Radhika, I will one second. I will open your. Yeah, I've sent it on WhatsApp right now. I will open your file as well. One second. राधिका दिस विल बी अ स्टोरी मुझे कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं चाहिए क्या हुआ है स्टार्ट फ्रॉम Q1 व्हाट हैज हैपेंड इन Q1 एंड व्हाई रीजंस या Yes, sir. Okay. So, good morning, everyone. I'm here to present the TCPL's last 4 consumer call summary. So, to start with the Q1. So, in the Q1, consolidated revenue grew 16% year on year. This was mainly due to the strong performance in India Foods, International Tree, and the surge in modern one trade. second राधिका why it is you start with Q1 Q4 से चालू होना चाहिए उल्टा जाते हैं क्या हम why is it from Q1 so that the सर हर एक क्वार्टर का सीक्वेंस फिर लास्ट में फिर एक FY25 की ओवरऑल व्यू के लिए ऐसे वैसा सोच के मैंने Q1 से स्टार्ट किया था. नहीं one second Q1 Q2 I'm so sorry हाँ we are in sorry 26 I'm so sorry हाँ sorry go ahead हाँ सर. sorry हाँ So in Q1, revenue grew 16% year on year. This was due to strong performance in India Foods, International Tree,
tea and the surge in modern trade and e-commerce. So India Foods grew 30% year on year. This was due to the consumer shift toward healthier products, in which Tata Salt grew 9%, with premium salts grew 35%, and Tata Sampann grew 37%. India Beverages showed a modest growth of 6% year on year. This was mainly led by ready-to-drink beverages, that is Narishco, which grew 7%, into which especially Tata Copper grew 22% through its new product launches and innovation. And then international business grew 10%, in which UK grew 14%, USD 8%. In USA, the coffee declined 4%. This was mainly due to the inflation in the coffee prices. And then Canada grew 12%. In the UK and Canada, the growth came due to the as the TCPL is the market dominant in the UK and Canada, and as they have launched various premium products there. And then non-branded grew 32%. This was mainly due to as the soluble coffee production of soluble coffee is very high right now in the India, and therefore the exports are very high for the same. Then the growth businesses, which includes Tata Sampanna, Soulful, Copper, Organic India, Sonets, grew 20% year on year. This was due to mainly led by Sampanna and ready-to-drink beverages, that is Narishco. Then talking about the cost, tea prices were up during this quarter. That was mainly due to the adverse weather, and which due to which the tea production was very low. The North Indian tea prices grew 16% year on year, and the South Indian tea prices grew 4%, and the Kenyan tea prices was stable. The coffee prices were 57% up due to the global issues in Brazil and Vietnam, in which the Robusta was up 19% year on year and Arabica was up 56%. The EBITDA grew 23% year on year, and the margin expanded by 80 basis points. This was due to the product innovation, which is new product launches mainly in the ready to drink and the premiumization in the coffee is in the and the gains from acquisition. So to talk about acquisitions, the TCPL acquired Capital Foods and Organic India. And in this quarter, the integration of Capital Foods was completed, which clocked a revenue of 1.6 billion. And integration of Organic India was still in process. Still, it clocked a revenue of 710 million. So to talk about the quarter two now, the 1 second, Radhika, I would like to interrupt you. When sorry, you're please. talking, you just have 1 minute, right? We discussed yesterday कि तुमको 1 मिनट से ज़्यादा है नहीं. So in Yes, that, sir. you don't have to give all that data. ठीक है? Okay, sir. कुछ नहीं बताना है. जो तुमने लिखा है, that's totally Hmm. fine. But सब कुछ Hmm. ऐसा नहीं है क्योंकि इतना percent. See, what is the important? Others also listen. When you understand the company, now Radhika, you have understand the company. Tata Tea, Tata Consumers में 2-3 businesses है. Tata Foods, Tata Beverages, and your और कौन सा तीसरा international and non-branded, right? 4 businesses. Yes, sir. Obviously, non-branded is the smallest one. So majorly, we'll focus on India Foods, India Beverages, and the international business. Okay. When Okay, you sir. see the revenue has increased by 13%, okay, led by India Foods, non-branded and international business. ठीक है. तो फिर start with India Food में क्या हुआ है? Okay. अभी ये सब Okay, sir. जरूरत नहीं है कि driven by India Food 28%. So revenue increased 13% to led by India Foods, non-branded and international business. So India Foods में India Food has increased 28%. Why? Why? Because of Value-added salts and Tata salts Sampann. and Tata. अभी उसकी ग्रोथ लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Okay, sir. ओके Okay, okay. फाइन. वो स्पेसिफिक Noted. दिखा है ना, वो मुझे दिख रहा है. ठीक है. क्योंकि Okay, इतना इतना डेटा, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू अ सेट ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू यू. सो उनको इतना डेटा याद नहीं रहेगा. सिर्फ इतना याद रहेगा, ठीक है, इंडिया फूड्स क्या बढ़ा है, क्वार्टर टू में क्या हुआ, इंडिया फूड्स बढ़ा है, कितने से बढ़ा? सर इंडिया फूड 28% से बढ़ा है. स्ट्रेस ऑन इट. व्हाई? इट इज बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू एडेड सॉल्ट एंड टाटा संपन्न. okay, sir. एंड दैट इज सेट टू बी प्रीमियमाइजेशन. ठीक है. Okay. इंडिया बेवरेजेस क्यों बढ़ा? इंडिया बेवरेजेस, सर इंडिया बेवरेजेस 3% से बढ़ा है. नहीं तो हम अभी इंडिया फूड ना, फिर हम बात करेंगे नॉन ब्रांडेड की. नॉन ब्रांडेड में क्या हुआ? बिकॉज वो सबसे ज्यादा Okay, बढ़ा sir. है. सो द नॉन Okay, sir. ब्रांडेड में the non-branded has increased 19% because of strong coffee realizations and which offset the soluble decline. That's it. Okay, sir. Soluble business क्या हुआ था? So there was a demand for high pressure coffee prices in the non-branded business.
फिर Okay, थर्ड टॉक अबाउट इंटरनेशनल. सो इंटरनेशनल में क्या हुआ है? सो इंटरनेशनल हैज इंक्रीज 7%. उसमें यूके यूएस कॉफी, यूएस टी एंड कनाडा वेर. अच्छा, मेजरली द ग्रोथ वाज लेड बाय premiumization in UK. countries like UK, US, and UK, US coffee and US tea. Okay, whereas Okay, sir. Canada was stable. Okay. Right. Then not हो गया इंडियन. हो गया. अभी फिर सर इंडियन बेवरेजेस थोड़े बहुत was subdued with 3% growth, जहाँ पे टी वॉल्यूम्स हैव डिक्लाइन एंड whereas the coffee prices have increased 3%. तो ये भी बोल सकते हैं कि टी वॉल्यूम डिक्लाइन, क्योंकि वॉल्यूम्स है ये. टी वॉल्यूम डिक्लाइन 4% ड्यू टू वीक एंड हाई प्राइसेस, and coffee posted a strong growth. That's it. Okay. 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 Go ahead now. You talk about this Q2. Okay. So in quarter two, revenue grew 13% year on year, driven by Indian foods, non-branded, and the international business. So in India Foods saw a 28% revenue growth. This was mainly due to value-added salts, which are premium salts, and Tata Sampanna. So, and then coming to the international business grew 7%, mostly led by the premiumization in the sonnets, where UK grew 7% and US coffee 2%, USD 6%. Non-branded Whereas business grew Canada was stable. and the Canada was stable. Yeah. Non-branded business grew 19%, which was mainly due to the high coffee realization from plantation. Soluble business saw a small decline of 2% due to the demand pressure from high coffee prices. So coming to the Indian beverages saw modest growth of 3%. This was mainly due to the high tea prices and weak demand for the tea, and the coffee posted a strong growth of 29%. Supported by So uh, then coming to the cost, tea prices were up due to the unfavorable weather and in unfavorable weather in which north was up 28% and south 25%. Coffee prices were up 82% year on year, in which Arabica was up 57% and Robusta was up 81% due to global constraints. Then coming to the EBITDA rose 11%, but margin declined 30 basis points due to high inflation in tea and coffee prices and the weak demand in the Indian market due to the price hike. अच्छा, एक सेकंड. व्हाट वाज द EBITDA margins over here? Up 11% EBITDA was up. Margins नहीं दिखा है. Okay. What was? I just write the margins over here. कि EBITDA कितना था? The reason is वो हर साल क्या क्या हुआ, हर क्वार्टर में EBITDA में क्या क्या चेंजेस हुआ. मुझे अच्छा, वाज okay. इट. ठीक है. So just a minute, I'll let you know. So in quarter one, the EBITDA margin. Oh, sorry. Okay, so this is in quarter one, the EBITDA margins. EBITDA बताओ sir कि EBITDA margin बताओ. EBITDA margins. Sir 15.3%. 15.3 Q2 में. Sir Q2 में 14.9, sorry. 14.9. हाँ, तो वो क्या कि हाँ. कितना EBITDA margin stood at 14.9, which is decline of 30 basis point. Okay, yeah, fine. Okay. अच्छा, what was it? Capital Foods reported revenue. हाँ, ठीक है. Then वो e-commerce. ये भी बोल सकते हैं if you want. E-commerce grew at 51% due to the HORERA and B2B services. This is one point. ठीक है, growth है. Okay. Okay. Now come to Q3. Okay. So in quarter three, revenue grew 17% year on year, again led by India Foods, India Beverages, along with steady performance from international and non-branded. Acha, So one second. Now, since you are coming from Q2 to Q3, sir, again, as you correctly mentioned that, sir, again, India food was up 13%, but this time Indian beverages was also up 16%, which was down last quarter. Okay. Okay. Fine. हाँ. बस last quarter में नहीं बात की ना उसकी. Yes. Okay. अभी मेरे तो so what है ना, I will be curious to understand अच्छा Indian beverages में क्या हुआ and वापस Indian food में क्या हो गया. Okay. You have to make the other guy curious कि अरे क्या हो गया.
Okay, sir. Okay. Hmm. So revenue grew 17% year on year, led by India Foods and India Beverages. In the last quarter, India Beverages were down, but in this quarter, India Beverage showed a good momentum. So India Foods were up 31%, mainly due to the Tata Sampanna and the consumer shift to the health focused and premium product. And the Indian Was same beverages, from, Acha, this was same from last quarter. Sir, this was same yes, from last quarter, as you know, we are seeing a premiumization trend over in India Foods. Okay. okay, Your okay, additional view on it कि सर क्या हो रहा है, सर इंडिया फूड्स में प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड दिख रहा है. okay. Yeah. So this was same as the last quarter, as we are seeing a premiumization trend in the India Foods. Then Indian beverages. In the last quarter, India beverages grew 3% only. But in this quarter, quarter three, India beverages grew 16% year on year, which was led by both tea and coffee. In tea, volume grew by 7% due to the pricing, and coffee grew by 28%. This was also led by ready to drink, which grew by 14%, in which Tata Copper particularly grew by 21%. So ये Q2 में नहीं था. सर Q2 में ऐसा स्टेबल था, फ्लैट था. फ्लैट था. अच्छा, ओके. ओके, हम्म, फाइन. हम्म. हाँ, तो मैं एंड देन बोलता हूँ दिस वाज फ्लैट इन Q2 which has, now it has increased. हाँ हाँ हाँ. Ready to drink, so we understand that ready to drink segment is increasing, and वो न्यूज में ओके. आ ही रहा है, नो, वी आर सीइंग न्यूज में सब आ रहा है ready to drink. यस, हाँ. हाँ. Yeah. So coming to then growth businesses grew 17%. ये था ना इंटरनेशनल नॉन ब्रांडेड, तो तो बोल मतलब अच्छा, वो तो नॉर्मल था. ओके, so नॉर्मल you था. can say that. So there was, so the international business and non-branded was flat at 8 and 9% respectively. And ये था ओ, ना, Canada was back to growth. In international business, Canada was stable ना last 2 quarters में. हाँ हाँ हाँ. हाँ, तो ये भी है ना कि Canada is back to growth. ये सब हम्म. लिंक हो के बोलना है, ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन में एंड में सब बोलना है. तो ये उधर ही बोलना है कि सर लास्ट क्वार्टर में नहीं था, Canada is back into growth, whereas टी यूएस में कॉफी एंड टी आर स्टेबल, which is growing at 8%. नॉन ब्रांडेड में क्या? ओके. Okay. So international and non-branded business was stable with 8% and 9% growth respectively. And in international business, Canada saw a recovery of 2%. Yeah. And coming to growth businesses grew 17%, mainly due to the new launches in the new acquisitions like Capital Foods and Organic India, and their expanding presence in the food services and pharmacy channels also. अच्छा, नहीं, सो राधिका, दिस ग्रोथ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ, इसी का पार्ट है ना, किसी का फूड पार्ट में. सर एक्चुअली ग्रोथ बिजनेसेस में दोनों है. कुछ हाँ, इंडिया फूड्स के प्रोडक्ट है, कुछ इंडिया बेवरेजेस के प्रोडक्ट्स है. करेक्ट. तो यू कैन मिक्स इट ओवर हियर कि सर इंडिया फूड्स में द ग्रोथ वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द लॉन्च इन कैपिटल फूड्स. तो फूड्स है तो ओके. प्रॉब्लम इसमें ही आएगा ना, कैपिटल फूड्स लिखा ही है. हाँ 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 एंड हाँ. इसमें भी इसमें भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक इंडिया के बेसिस, ऑर्गेनिक इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है, कौन से हम्म. इंडिया के जो बेवरेजेस प्रोडक्ट्स है, दैट इज लेट. हाँ तो क्योंकि ये ग्रोथ बिजनेस इज नॉट अ डिफरेंट सेगमेंट जो टाटा लोग ने बोला है ना, ये अलग सेगमेंट नहीं है. बिकॉज हाँ, सेगमेंट नहीं है अलग से. अभी ये मुझे पता है इसके लिए ठीक है, पर अगर मुझे पता नहीं होता तो सबको लगता कि ये कुछ अलग बिजनेस है, और एक कुछ. ओके ओके ओके. इट इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस ओनली. तो इसी में ऐड करना था वो कि सर ये जो ग्रोथ हुआ है रॉबस्ट टाटा संपन्न इससे भी हुआ है, एंड थोड़ा बहुत कैपिटल गुड्स से भी, कैपिटल फूड से भी हुआ है. एंड कैपिटल फूड्स में कौन से प्रोडक्ट्स है दैट यू कैन जस्ट मेंशन इट ओवर हियर कि ओके सर. कैपिटल फूड्स ओके के ये प्रोडक्ट्स में ग्रोथ हुआ है. ओके. ओके अभी तभी फिर 17% लेने की जरूरत नहीं कि क्यों, बिकॉज ओके ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ बोथ ना, तो 17% बोल नहीं सकते. तो सर ये ओके 31% जो ग्रोथ हुआ है उसमें कैपिटल फूड्स आल्सो प्लेड अ बिग पार्ट, एंड ऑर्गेनिक इंडिया आल्सो. ओके ओके. ओके. तो अभी कैपिटल फूड्स में प्रोबेबली इतने ही आएगा, बट ऑर्गेनिक इंडिया में आई थिंक थोड़े प्रोडक्ट्स है जो बेवरेजेस में आते हैं, रेडी टू ड्रिंक वाले. हाँ सर. तो यू हैव टू टेल लाइक दैट कि सर इंडियन फूड्स हैव इंक्रीज बिकॉज ऑब्वियसली टाटा संपन्न एंड आल्सो कैपिटल फूड्स. जो भी फूड्स के नाम है ऑब्वियसली इट मींस दैट इट इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, whereas Indian beverages which grew 16% was led by organic India as well, the ready to drink products. कि हमको पता है इसमें कौन से प्रोडक्ट्स है. ओके सर. हाँ कैपिटल फूड्स में कौन से प्रोडक्ट्स थे? सर, कैपिटल फूड्स में टाटा सोलफुल, जैसे कि उसका सीरियल्स, फिर मूसली, सीरियल. ओट्स. तो वो भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, सीरियल्स, मूसली, ओट्स, ना, वर द हाँ रीजंस फॉर द गुड इंक्रीज इन इंडियन फूड्स.
ओके। Okay, sir. एंड ऑर्गेनिक इंडिया में भी वे थे, आई थिंक ऑर्गेनिक इंडिया में क्या था जो रेडी टू ड्रिंक वाले थे, नरिशमेंट। Was some nourishment, oh, green tea, then the Tata Gluco, then the हाँ, Tata Copper. तो वो कौन सा था, पार्ट ऑफ रेडी टू ड्रिंक ना? Yes, sir. लिया है ना तुमने, लिया है तो फिर वापस यहाँ पे क्यों लिखा है अलग से? मतलब हाँ, समझ, sir. देखने वाले को ये नहीं समझ आ रहा, मुझे लग रहा है कि अरे कोई नया बिजनेस की बात कर रहे हो। Okay, okay, sir. ओके। ओके। Okay. या गुड। So tea prices were up 28% year on year. Again, this was due to the low yield, which was driving the input cost pressure. And the coffee prices, in which Arabica was up 64% and Robusta 86% due to the weather disruptions in Brazil and supply shortages. EBITDA was flat, but the margin अगेन decline. राधिका, टी प्राइसेस वर अप अगेन दिस क्वार्टर व्हिच वाज अप 20%, 28% year on year. हाँ. व्हिच इज ऑन नॉर्थ एंड साउथ। जो क्वार्टर वन में हुआ था, क्वार्टर टू में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। हाँ. टी प्राइसेस फ्लैट थे क्वार्टर टू में, क्वार्टर थ्री में हम्म. वापस टी प्राइसेस बढ़े हैं ड्यू टू, हाँ क्या था, बिकॉज ऑफ ड्राइविंग लो Low यील्ड। yield. हाँ, ड्यू लो यील्ड। हम्म. कॉफी में क्या हुआ है, ग्लोबल शॉर्टेज हुआ हम्म. है, एंड वो हैड लेड टू इंक्रीज इन Yeah. रोबस्टा एंड अरेबिका, फाइन, ड्यू टू वेदर डिस्ट्रप्शन इन ब्राजील, बस। से अगेन। Okay. So tea prices were up, tea prices were again up 28% year on year, which were flat in the quarter two. This was mainly due to the low yield in the tea crop. And the coffee prices were up, in which Arabica was up 64% and Robusta 86%. This price surge was mainly due to the weather disruption in Brazil and supply shortages. ओके। Then EBITDA was flat, but as the tea cost inflation eroded the margin, as the margin was down 210 basis points. But the international EBITDA grew 26%, while India EBITDA fell 19%. ओके। EBITDA नहीं Yeah. बोलना है, वो ठीक है, मार्जिन्स आर इम्पोर्टेंट। Okay. Okay. EBITDA इट्स नॉट, बिकॉज सेल्स में आ गया ना, ठीक है। तो Mm-hmm. वैसे मार्जिन डिक्लाइन हो गया था, इट मींस दैट EBITDA भी गिरा होगा। वो सब हमारे रिपोर्ट्स में आ जाएगा, वो जो व्हेन वी टॉक अबाउट रिपोर्ट्स। Okay. In Starbucks हाँ revenue नाउ, grew. अच्छा नाउ फर्स्ट ये सब हो गया, नाउ ये फाइनेंशियल्स हो गए। नाउ सर, Hmm. एडिशनल थिंग दैट हैव हैपेंड इन दिस क्वार्टर व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट, Okay. व्हिच इज So, some of the additional things that I would like to highlight in this quarter are Starbucks revenue grew 8% year on year, and then e-commerce grew 59% due to B2B food services and the pharma channel. this is again from the last quarter. Last quarter it was up 85%. This quarter it has grew 29%. The 59% now it is year on year. Okay. This Yeah. one. Okay. Anyway, also, Starbucks opens a new 16 new stores, expanding the हाँ. retail. हाँ, so मतलब 73%. ठीक है, डेटा पॉइंट, दिस इज डेटा पॉइंट। हाँ. अच्छा Then सॉरी, come. I missed over here. It was, this was fine. I think international EBITDA and India EBITDA fell. This was fine. I thought वो अलग अलग है. It is good thing. ये ठीक है हाँ, सर हाँ. कि अलग अलग बताया, ठीक है। Yeah. Now Q4. So in quarter four, revenue was up 17% year on year, driven by India Foods and then India Beverages. After quarter two, India Beverages has been showing a strong growth. Then in coming to India Foods grew 27% year on year. Again, this was led by value-added salts and Tata Sampanna, which has been in the premiumization trend from the last three quarters. Then the India beverages grew 17%, mostly due to the price hikes, and the growth was mostly led by the coffee, which was up 44%. And in this quarter, Narishco also grew 13%, led by Tata Copper. And as we also have, since there was sudden heat wave in the parts of India, so this led to the growth of the Narishco. That is Then ready to drink. Okay. yeah, that is ready to drink beverages. Then coming to the non-branded business grew 25% due to the coffee plantation growth, which was up 60%, and solubles, which were up 12%. This growth came even when the coffee prices were at their all-time high.
So coming to the coffee cost, tea prices were up. Tea prices have softened quarter on quarter, but they remain high for year on year. For North India, they grew 14.2%, and in South, they grew 25.6% year on year. The tea prices were actually subduing as compared to the quarter three. Then coming to the coffee prices, Arabica was up 97% and Robusta was up 65% due to the adverse weather in Brazil and tight global supply. Then coming to the EBITDA was grew 8%, but it was down by 110 basis points. Again, this was due to the tea cost inflation, but the non-branded EBITDA rose 18% due to the high plantation yield. And then coming to the other additional things that I would like to highlight, in this quarter, that is quarter four, innovation to sales ratio rose to 5.1%. ये भी ना स्टारबक्स ओपन न्यू ऑफिस तो वो तो मतलब उनका हर एक क्वार्टर में सर एक न्यू मतलब थोड़ा ना एक तो खुलता ये ही था है ना न्यू। रेवेन्यू क्रॉस 1 बिलियन ये भी है ना हाँ 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 100 ये ठीक है and for Tata Starbucks the revenue crossed 1 billion mark. such a good thing Yeah. okay Then to summarize all the quarters and to give an overview of FY25. In FY25, revenue grew 16% year on year, driven by India Foods, India Beverages, and non-branded mostly. Also, this great growth came from premiumization, price hikes, and acquisitions. So, for India Foods grew 29% year on year. This was, as we saw in all the four quarters, on the back of value-added salts and Tata Sampanna only, and the consumer shift towards the health-focused products and premium offerings. India Beverage, such as Tata Soulful no? हाँ sir, Tata Soulful. Okay yeah India beverages grew 10%, with tea volumes were up only 1%. This was due to the cost pressures, but coffee surged 33% due to the premium offerings. And as we saw in all the four quarters, Narishko, that is ready to drink beverages, grew 14%, led by again Tata Copper, which was up 21%. And of course, this was also due to the sudden heat wave and the new product launches under Gluco Plus. Then international business was up 7.1% year on year. This was mainly due to the demand for tea peaks for in USA and 8 o'clock in UK. And the Canada, they actually introduced the India best products. So the Canada overall grew 5%. And coming to the non-branded revenue actually recorded 21, grew at 21%, which is actually was at the all-time high of its last 10 years revenue. This was mainly driven by plantation and soluble growth. plantation and Then, soluble yeah what is soluble okay fine hmm. Then coming to the tea prices, that is cost. Tea prices surged 19% year on year, despite there was seasonal moderation in the last quarter, that is quarter uh, 3 four. but 4 sorry Yeah, quarter four. But overall, tea prices grew 19% year on year. And the coffee prices, in coffee prices, sorry, sir, yeah, I've made a mistake. But coffee prices, Arabica was up 97% and Robusta was up 65% year on year. This was due to global shortages and mostly global headwinds. That is, as we saw in the last quarter four and quarter three, there was the weather disruption in Brazil and Vietnam. Again, EBITDA grew 8% year on year, but margins were 100 basis points down due to tea cost inflation. But international and non-branded business helped in offsetting the India pressures. And in this, actually, overall, in this FY25,
Tata Starbucks opened 58 new Starbucks, which was a really high number. And the organic in the FY25, Capital Foods clocked the revenue of 8.8 billion, and organic food clocked the revenue of 2.9 billion. So Okay, fine. So you yes, can end a bit, थोड़ा end कर सकते हैं, if you want to, if I would like to summarize. See, ये summary था at the end, but it can be a bit okay, interactive. कि summary, I don't know, sir, overall FY25, what happened is that, correct, as you rightly mentioned, and at the end, खत्म करते करते, you can talk basically like, sir, the so यहाँ से समझता है, so we understand that, overall the premiumization trend has increased, which is currently we can see in the food business. Indian beverages is slowly increasing because of the ready to drink products. Tea prices and coffee prices are at elevated levels. So overall, we feel that, once this prices settle down and once we see that the inflation is settling down, Tata consumers might see a good growth ahead. ऐसा ये okay. थोड़ा बहुत एंड कर सकते हैं, जो भी तुम्हारा कंक्लूजन होगा वो. ओके तो ठीक है. नहीं, मेरे को ये ऐड करना था, मतलब कि ना कॉफी के प्राइसेस तो और बढ़ेंगे ही, हम्म. as we have seen in the ठीक, morning हाँ. call discussions that the coffee हम्म. prices may remain elevated in the forthcoming year, calendar हम्म. year, but tea prices are expected to soften. Yeah, करेक्ट. सो आदि का कितना टाइम लगा है करने को? सब एक्सप्लेन करने में या पूरा नहीं नहीं, ये करने बनाने में? को. सर कॉन कॉल समरी को टाइम लगा, बट एज इन पूरा ये बनाने को सर हो गया 3-4 आवर्स में सर, मतलब ये नहीं है, नहीं, 3 ओवरऑल 4 कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के एनालाइज करके फिर वो कंपनी, लेट्स से इफ यू टॉक इन आवर्स, तो कितने यार लगेंगे, प्लस ये कंपनी समझने को व्हाट वी डिड. सर कंपनी समझने से स्टार्ट किया तो सर 1-2 वीक्स, 2 वीक्स तो आराम टू से. वीक्स 2 वीक्स. या Okay. So guys, good one, Radhika. Good presentation. So now, obviously, when you do 2, 3 more companies, then you will understand, how to present it in a proper way. So guys, I will say Radhika is just an MBA SEM2 student. Okay, she has not even completed an MBA. So if she can do it, why you cannot do it? Okay, वो तो internship आ रही है मेरे पास. That's a different thing. She is not a part of our RK advisory, but वो college के through आ रही है, and she has done this for me. I will say ये मेरे लिए किया है उसने. But if she can do in 2 weeks, why others you cannot? Because you see now, मैंने तुमको बोला था कि तुमको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज ये सब चीजें जो ग्रोथ बिजनेस है, अगर तुमको बताने नहीं आ रही है इंटरव्यू में, कह रहे तुम अलग ही बता रहे हो कुछ कि ग्रोथ बिजनेस, अचानक से ग्रोथ बिजनेस कहाँ पे आ गई, ये चारों के अलावा प्रोडक्ट्स क्या क्या है. टाटा संपन्न ग्रो रहा, तो मुझे समझा टाटा संपन्न है, उसके साथ वो टाटा सोलफुल भी था. आई रियलाइज इट एट द एंड कि सोलफुल भी है इसमें. दो लोग ने लिखा है ग्रोथ बिजनेस में. कैपिटल फूड्स में क्या, ऑर्गेनिक इंडिया में क्या है? ऑर्गेनिक इंडिया में दो चीजें, उसमें फूड्स भी आता है, उसमें तुम्हारे वो रेडी टू ड्रिंक्स भी आते हैं. तो यू हैव टू टेल इट इन अ बेटर वे कि क्या क्या है. इसके लिए कंपनी समझना इज सो इम्पोर्टेंट. एंड अभी ये तो सिर्फ एक था, बिकॉज दिस वाज हर कॉलेज, आई विल से एन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट फॉर हर. बट लाइक यू है ना, इफ यू एक्चुअली वांट टू गेट अ रोल, तो तुमको इसके साथ और एक कंपनी कंपेयर करनी है कि टाटा कंज्यूमर्स में ऐसा हो रहा है, तो उसके साथ जो कॉम्पिटिटर ना, बेसिकली नेस्ले इज द क्लोज कॉम्पिटिटर. उसका एचयूएल भी आता है उसमें, फूड्स में आता है, इट इज इनटू होम होम केयर तो नहीं है, बट नेस्ले भी, एचयूएल भी आता है इसमें. So these things are, important to know. So the process that we do, फाइनेंशियल मॉडल बना के कुछ मतलब का नहीं है. अभी ये सब चीजें ना, अभी क्यों, why is that important फाइनेंशियल मॉडल? बिकॉज ऑल दिस थिंग दैट शी हैज रिटन, ये परसेंटेज सब डाले, वो उसके मॉडल्स में है, वो उसके पास एक्सेल में डेटा है, तभी ये सब लिख पाई. So that is the reason financial models are made, so that you have an Excel file, you have an Word file. पर तुम्हारे पास सिर्फ वर्ड हो, एक्सेल नहीं हो, और ये सिर्फ एक्सेल है, वर्ड नहीं, so that will not give a good impression in your interviews. So when you do this 3-4 company, मैंने तो 15 companies बोले. See, what if you do 15 companies? Adhika, if I ask you, what if you do 15 companies? 2 weeks लगा. next company I will say 1 week में हो जाना चाहिए कि तुमको समझ में अभी लिखना क्या है. Just हाँ assume, सर. if this kind of things happen, जॉब मिलना इतना इजी हो जाएगा. फिर कोई भी, इट माइट बी एनी रोल, सिर्फ टेक्निकल राउंड है वो तुमको क्लियर करना होगा. दैट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, वो भी हम करेंगे वैसे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में, बट दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन.
बट द कोर नॉलेज दैट वी टॉक अबाउट ना, कोर फाइनेंस की जो बात कर, दिस इज व्हाट इज कोर फाइनेंस, कि हाउ यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन यू पुट इट इनटू अ रिपोर्ट। कि प्रेजेंटेशन नहीं आए तो तुमको फिर मतलब ही नहीं है तुम्हारे इंटरव्यू का। तो जो भी स्टूडेंट्स प्लेस हुआ ना, दैट सुगो इज दैट हु प्लेस्ड इन 45 डेज, उसको यही आने का, ही हैज डन, उसने कितने सारे रिपोर्ट्स बनाए होंगे। ठीक है, टेक्निकली ही वाज साउंड बिकॉज ही वाज अ सीए, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। उसके पास एक्सेल्स थे, उसके पास वर्ड फाइल्स थे, इवन पहले भी जो हुए हैं, यू डोंट बिलीव कि एक एक इंटरव्यू में मैं अपने स्टूडेंट्स को, ही वाज आस्क्ड टू समराइज अ कॉन्फ्रेंस कॉल लाइव, लाइव समराइज करने बोला था उसको। उसको तुमको पता ही नहीं अगर वो क्या फॉर्म में लिखना है या क्यों लिखना है वैसा, तो इट विल नॉट, you will not clear your interview rounds। यही हो रहा है। what I am seeing is basically in the MBA colleges, CA तो ये समझता ही नहीं क्या है ये, अंडरस्टैंड कि ऐसा भी कुछ लिखना होता है, कि कभी कभी पढ़ा ही नहीं होता है। ओके, या सत्यजीत, you want to say something? हाँ, yeah. As well, like quarter to quarter, can you write about the stock prices up and down, like what happened to, like that will conclude it, like what, हाँ, like we are saying it revenue this, how it affects the stock price, that also will be good like estimation, no, sir? yeah. You remember what I told you at the start when we started this, कि हमने वो मार्केट ट्रैकर बनाया था, एक साल में क्या हुआ है, स्टॉक गिरा क्यों है, तो पहला तो वही था। तो इसीलिए ट्रैक, एक साल तुम ये कंपनी बोल रहे हो, तो अगर तुम्हारे पास वो मार्केट ट्रैकर है तो यू नोट आर TCPL में एक साल में क्या हुआ है ना, हमारे पास वो इसने बनाया है, राधिका ने भी बनाया, वो तो था ही, मतलब इट वाज हाँ सर, अज्यूम्ड कि मैंने भी उसके ना बस बाद वही ही। बोला, क्वार्टर टू क्वार्टर बदल, हाँ उसके बगल हाँ, में लिख सकते हैं ना इस क्वार्टर क्या, वैसे वो तो फुल ईयर का हो गया, बट क्वार्टर क्वार्टर सेम अगर रिपोर्ट के बगल में लिख दें तो क्वार्टर टू एक्सप्लेन करने क्वार्टर और में इतना समझने में फर्क, इजी रहेगा। सी तुम रिटर्न्स कभी क्वार्टर की बात करते हो क्या? सर क्वार्टरली नहीं रिटर्न, नहीं तुम्हारी सैलरी बोलते हो क्वार्टरली है? तुमको मैं पूछा नो तुम्हारा सर, CTC क्या था, क्वार्टरली सैलरी सैलरी बोलोगे? नहीं सर, बट ये इफेक्ट जो हो रहा है, जैसे ये ग्रो हुआ, ये इम्पैक्ट हुआ, तो उस पर दिख रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं बस कोशिश करूँ, नहीं, तो जैसे एक यूजुअली वी क्वार्टर में टॉक पर इंक्रीज हुआ, ईयर ना, अगले क्वार्टर में decrease। हमने हाँ समराइज क्या किया, करेक्ट, पर ईयर ना, बिकॉज करेक्ट, यस यस, तो पर ईयर पे ही होता है, बिकॉज वैल्यूएशन पर ईयर पे होता है ना। यू कैन श्योर नॉट, श्योर, क्वार्टर में तो कुछ भी होगा ना, अंडरस्टूड, यू कैन नॉट से, बट पूरे साल में क्या हुआ है। तो ये उसका है, पहला तो वही था कि टाटा कंज्यूमर देखा है, जैसे ये है मेरे पास, नॉट श्योर इट्स राइट। टाटा कंज्यूमर्स, टाटा कंज्यूमर्स एक साल में क्या हुआ है, इट इज फ्लैट, लास्ट 1 ईयर 30, ये पकड़ ले यहाँ से, तो इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो ये है हमारे पास, इसके तो बोला था वो मार्केट ट्रैकर, पहले चीज यही करनी होती है तुमको एज ए एनालिस्ट। एनालिस्ट नहीं, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल नॉलेज, कि रोज क्या हो रहा है मार्केट में, व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। तुमको समझा अभी क्यों हुआ है वो एक साल में इतना क्यों है फ्लैट, टाटा कंज्यूमर, बिकॉज उसमें ये सब हुआ है। ओके, गाइस, जो भी मैं कर रहा हूँ ना, व्हाई इट इज ऑल लिंक्ड, मैं बोलता हूँ कि डोंट मिस एनी ऑफ द टास्क, बिकॉज दिस टास्क आर ऑल लिंक्ड, एंड ये सब ना मैंने खुद किया था, हर एक का मतलब है, ये मैं तुमको क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तुमको कहाँ ना कहीं जाके काम में आने वाला है। कि जैसे अभी सत्यजीत ने राइटली पॉइंट आउट किया कि सर स्टॉक प्राइस बोलेंगे नहीं, तो पहला क्वेश्चन यही था, मैंने बोला था, पर उसको स्ट्राइक हुआ बाद में कि सर बराबर है ना, स्टॉक प्राइस भी तो बोलना चाहिए, कि अगर हम इतने क्वार्टरली बात कर रहे हैं तो स्टॉक प्राइसिंग में क्या हुआ तो पता होना चाहिए क्या हुआ है, इतना जब मूवमेंट्स हो रहा है स्टॉक्स में। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि हाँ ईयरली बताना होता है, क्वार्टरली की जरूरत नहीं होती। सो when you have this kind of information and assuming you do it for 3 to 6 months, 25 जो प्लेस हुए हैं लास्ट में, लास्ट 6 महीने में, 6 मंथ 6 मंथ्स में, ठीक है, उसमें से 20 लोग जो ऐसे थे जो लोग रोज के रोज यही करने गए। इनफैक्ट वो अभिषेक तो आज भी सुबह, मुझे सुबह रोज सुबह उसका मैसेज आता है कि सर आज ने ये देखा, क्या क्या हुआ, मुझे उसके लिए अपडेट होना पड़ता है कभी कभी, मेरे को कहा से चीजें पूछता है, सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, देखा क्या आपने, वेदर ही इज नॉट फॉलोइंग दैट स्टॉक, बट ही इज सो एंथुजियास्ट कि सोच रहा है कि सर देखा मार्केट में आज ये हुआ, देखा मार्केट में आज वो हुआ। सुबह सुबह रोज मैसेज, ऑलमोस्ट उसके डेली मैसेजेस होते हैं ना, व्हाई इज डूइंग। उसको मैंने बोला है नहीं, उसका तो हो गया, ही इज अर्निंग 17 lakhs, तो दैट इज व्हाई ही इज अर्निंग 17 lakhs। एंड आई विल से ही बिलोंग टू सम डिफरेंट फील्ड, एंड वहां से उसको ये रोल मिला है। वो जो काम करने का पहले 1 1.5 साल उसने काम किया, दैट वाज इररिलेवेंट टू फाइनेंशियल मार्केट्स।
कुछ तो था, मतलब बेसिक वो स्टेटमेंट में था रिलेटेड, टेक्निकल था रिलेटेड. एंड आई विल से ही इज नॉट इवन एन एमबीए फाइनेंस, ही इज एमबीए जर्नल, जर्नल एंट्री, मतलब वो जर्नल मार्केटिंग रूलर सब मिक्स है, बस दैट काइंड ऑफ एमबीए. So guys, high time. Now from tomorrow as we'll start from modeling, so it will move a little fast. तुम्हारे अगर पिछले अगर तुम्हारे नहीं हुए ये सब बना के, जो जो नए जाने प्लीज आई विल से नो जस्ट हैव अ लुक एट द वीडियोस, क्या क्या बोले, इट इज नॉट रिलेटेड टू द मॉडलिंग, बट पता होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड वो सब चीजें तुमको कोलैबोरेट करके ही बात करनी है. ओके, फाइन. एनी डाउट्स गाइस? कुछ बोलना है, पूछना है? ओके. So I will also expect you guys to do this conference calls. वो मैं बता दूंगा कैसे करना है, but expect कि तुम भी ऐसे ही लिखो. इसको और थोड़ा रिफ्रेम हो सकता था, बट इट इज वेरी गुड. नाउ ऑब्वियसली आई विल से राधिका ने मेरे अंडर लिखा है वो, बट ये जो चीज था वो उसने खुद लिखा है. मैंने नहीं लगा, मैंने उसको एकदम स्पून फीडिंग नहीं किया है, उसने खुद ही लिखा है वो सब. मैंने सिर्फ उसको फॉर्मेट बोला था, 2-3 बार मिस्टेक किया उसने, बट थर्ड टाइम उसको आ गया. एंड नाउ आई विल से कि जो 1 महीने पहले थी एंड राधिका यू आर नाउ टुडे इज लुक्स अ बिट डिफरेंट. स्टार्टिंग में तब यू आर जस्ट हियर एंड देयर, बट अभी प्रोबेबली थोड़े बहुत है चेंजेस, बट दैट्स टोटली फाइन at your level. But just that now you have to be consistent enough to get a role. कि अभी ऐसा करके छोड़ जाना नहीं चाहिए कि सर मैंने तभी पढ़ा था, अभी कॉलेज चालू हो गया, अभी मेरे पास ध्यान टाइम टाइम नहीं है देने को. देन अगेन वो फिर ये भी तुम्हारा कुछ काम का नहीं होगा. No, so we'll keep improving. Thank you, sir. We'll start with the news. I think Satyajit, you would like to start? Satyajit? Ah, yeah. Satyajit, you want to start? Yes, sir, just a moment. Yeah. Subhajit, you go next. Subhajyoti, you go next. Okay, sir. Satyajit waiting. Yes, sir, please. Good morning, everyone. I would like to give an update on Trent in the grocery business. Like everybody knows Trent about the Zudio west side, but there is a Star Bazaar, which is a about contribute around 15% about the revenue of the Trent business. Right now, Trend has clocked a 1.6x Y on Y revenue growth because there is a very good penetration of private label contribution around 73%, sorry, in FY25, which has increased their revenue to 88.54 billion. It's a 25% Y on Y growth from 70 billion in FY24. And it's not like just Zudio is a contributor. Zudio has contributed 83 billion in this quarter, and is sorry in this FY, and revenue of Star is 88. It's more than Zudio's contribution. And in future, Trent is looking forward for increasing his grocery and food items because the market share of grocery and food item is more than your this clothing or retail business, and they have their own brands like Kalia in cleaning aids, Febsta in package and food beverages, Kyle in personal care, and others are also there. But One like second. who are Satyajit, while yes, sir. speaking, stop. Okay. Sir, Yes, sir. it Understood. contributes. So brands like what is this? Clear. Which includes cleaning aids and home care. Okay. Fabsta, which includes food beverages. Skike, which includes personal care. And Shubhanan, which includes puja products. तो थोड़ा स्लो बोलो ना, तुम सब एक Sure, साथ sir. बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो. तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना, तो फिर क्यों Yes, sir. आराम से बात कर सकते हो ना. Yeah. So they have their own brands which are displayed, and they are contributing 70% of their revenues, which is increasing the effect on the margins.
And in future, from FY21 to FY25, they have increased their stores in 10 cities and from 60 to 78. And they also focus on 80% of their vegetables and 70% of their fruits from the fresh farmers and quality, which are ensuring their customer satisfaction and their retaining. And in future also, they are they are planning to contribute 220 billion in this physical footprint, which is their plan for the future growth. So this was the only. Okay. So Harry is good with it. You have written it very well. But वो start के में जो heading किया ना, उसी में लिख देते थोड़ा तो मुझे समझ में आता ना कि what are you talking about? Because what was the heading? Read again. Sir, Trend grocery push delivers record revenue. Star Bazaar on recovery path. Like it's first time they have recovered from loss, sir. So that I would have missed in numbers. But yeah, नहीं, that's why तो I कैसा took होता on है recovery path. ये ना, this is like a journalist writing it. Okay. कि तुमको पेपर लिखने बोला तो मैं ऐसा लिखोगे कि लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए, ठीक है। हमको लोगों को अट्रैक्टिव ना करना, हम लोग को इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम जनरल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर टॉकिंग जनरल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इन्वेस्टर कैन ऑल्सो बी जनरल, ऐसा नहीं कि जनरल मतलब सिर्फ हाई फाई पॉइंट लिखना है। आई सेइंग इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बोलना है। तो ये जो होता है ना, इसमें मुझे एक भी रीजन नहीं मिलता कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट और व्हाई शुड आई नॉट। ओके, so this would have been a better one. Key Star recorded 1.66 times year-on-year growth. ये क्यों हुआ है? Why is this happened? It's a private label contribution, like they are jumped, like in-house the products they have, and that only is the reason, sir. And their customers retention also is very good, sir, and they are increasing their footprints also. Like private label contribution has increased, sir, because of that margin has increased and customer stickiness is returned, like they have contributed and retaining the customers. तो ऐसा कुछ ना, I think this should be a one कि ये increase क्यों हुआ है? Why was that increase? So ये पता अलग ना, private label contribution jumps to, okay, we can also say कि Star recorded a 1 due to private label contribution. तो ये अभी ये लिखने की जरूरत नहीं कि private label jump to, या फिर ये तुम heading में लिख दो कि Star recorded 1.6% 1.6x growth because of private label contribution, mainly because of private label contribution. फिर वहां पे लिख दो कि private label contributed how much, 73% to in FY25 from 67% boosting margin and customer से। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो सकता है। हेडिंग थोड़ा सा चेंज करोगे, हेडिंग पढ़ के आई शुड गेट अट्रैक्टेड। ओके, एंड ये सब फिर तो प्रोडक्ट ऑफरिंग है। फिर ये था ना, ट्रेंड इज शिफ्टिंग, सी दिस शुड कम सेकंड ना यहाँ पे, कि ये सब तो प्रोडक्ट कैटेगरीज है ना उसके। Say, I thought whom I am introducing, they should know the products. Like most of people don't know the नहीं, star products. तो So इसके लिए लास्ट में करना है। सी ना, स्टार तो पता है ना हमको क्या करता है, स्टार के प्रोडक्ट। तो ये एक जो मेरे को पता नहीं था कि उसके ओन ब्रांड्स है, ठीक है। तो कैसा है, व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, मतलब तुमने हेडिंग चालू किया है तो खत्म ही उधर ही करो, वापस कि हेडिंग का पॉइंट वापस नीचे नहीं आना चाहिए, understood. ठीक है। सारे कि जब चालू कर दो तो उधर ही wise. खत्म करना, कि बीच में फिर तुम ऐसा बोलते हो कि पहले तुमने ना गाड़ी के फीचर्स के बारे में बता दिया, अभी तुम उसके इंटरनल्स के बारे में बता रहे हो। मतलब तुम गाड़ी कैसे चलती है बता दिया, फिर अचानक से तुम फीचर्स पे आते हो एंड फिर आगे न्यूज़ है कि सर इसका टायर अच्छा है, टायर वैसा है। तो नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना, होता है कैसा, गो टू बाय अ कार, either they talk about a feature, either they talk about इंजन बताते बताते मैं तुमको बोलूँ कि इसका ना इंजन 1000 सीसी का है और इसके पास ना एंड्रॉइड प्ले है, इसमें क्या रिलेशन है दोनों का? Connection break हो ठीक है। कोई रिलेशन नहीं है ना, कि गाड़ी में एंड्रॉइड प्ले भी है, पावर विंडोज भी है, अभी उसका इंजन से क्या लेना देना। सो ये एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव है, यू मार्केट योरसेल्फ, मार्केट योर रिपोर्ट्स, बिकॉज कोर फाइनेंस में व्हेनेवर यू गो, तुम जो लिखते हो ना, अगर तुमको खुद को मार्केट करने नहीं आता तो तुम्हारा कोई बाय नहीं करेगा। इट इज लाइक सेम लाइक दैट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोर फाइनेंस में तुमको सेल्स नहीं करना होता है, इट इज नॉट डायरेक्ट सेल्स, तुमको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू सेल इट। या तो इतने अच्छे से प्रेजेंट करना होता है कि सामने वाले को वो अच्छा लग जाए, या एक बार में ही पढ़ के समझ जाए। Okay, Surojadi, you go next. Good morning, everyone. On today's news, Surojadi, your voice is a bit low. Sir, is it better now? No, it's still low. I think it's you're talking from far away. Sir, is it
Better. Now it's fine. Now it's Good morning, everyone. On today's news, India's quick commerce sector recorded a 150% year-on-year growth. This growth has been possible, but there are some interesting underlying trends related to it. As we have known, this sector has scaled its operations aggressively to over 100 cities, among which 90 plus of them are non-metro cities. Despite this push, non-metro markets contribute just 20% of the total gross merchandise value, underscoring a sharp gap in the adoption of these e-commerce services by the common people in non-metro cities. While the top 10 to 15% cities record stronger volumes, the orders per pay for per dark store falls below 1,000 beyond this tier of the top 10 15 cities and goes down further to under 700 in the next 20 cities below them. This signals a plateau of demand in the smaller markets long before hitting the 100 order per day benchmark, which is a critical criteria for scale up. What are the main reasons behind this lack of adoption? The consulting firm Redseer highlighted that the limited digital maturity and trust issues have restricted frequent use among tier 2, tier 3 consumers. Additionally, low population density curbs demand, while localized tastes and preferences remain poorly addressed by the market product selection of the offerings presented by these platforms. Rajat, why did you choose this news? Sir, You have given me this. Now what should I do? Sir, I think one of the big growth drivers when we talk about quick commerce and its expansion, we talk about the rural expansion or targeting the unpenetrated segments in rural areas. But in reality, the truth is that it only contributes a small amount. So we need to keep that in mind when discussing how rural expansion can affect the growth of this segment. And this news shows why it is not it can be overhyped in certain cases. Fair enough, but I'm not satisfied with this news. मतलब अभी मुझे बोल भी नहीं सकता कि गलत है और बोल भी नहीं सकता कि right है, because यहाँ पे what I feel is the way you guys talking it, इसमें it's hardly there's any data points, correct? You can link it with some other. Yeah, if I want to talk about just 3 points, what 3 points will you talk about this? Quick commerce, okay, recorded 150% growth. Why? Why? Aggressive scale. Sorry? 100%. That cannot hear. Rajat, cannot hear you. Some problem with your mic. Okay. Okay, Chan, would you start with the news? Chan? Yeah, hi, sir. Yeah, hi. Which news should I tell? The Indian consumer Okay, premium so product. India consumers are preferring more premium products as sale of premium refrigerators, washing machine, TVs have surged up by 500 basis point for the period January to April 2025. Now the contribution of 55-inch big TVs have gone up from 38% to 41% for the overall TV sector. And front load washing machine sales have also gone up from 11% to 16%. And side by side refrigerators have gone up from 9% to 10%. नहीं तो ऐसा नहीं लिखते हैं gone up by up from up gone up नहीं होता है. See, side by side refrigerators have increased 100 basis point, you know. Yeah. Percentage when you're comparing you're comparing percentage ना, यहाँ पे भी percentage ना. When percentage compare तो it is you talking basis point 300 basis point 241%. Side by side refrigerator demand has increased, gone up नहीं होता है, increased 100 basis point. Okay. Go ahead. Yeah. But reason नहीं लिखा है. Reason? तो
क्या चीज? अच्छा, reason, अच्छा, preferring premium products. Fine, fine. Sorry, go ahead. Yeah. So, smartphones have actually overall fell by 2% year on year. But if you look at the premium models like 30K plus models, they grew by 2%, and the 45K plus premium models, they grew by 20%. Consumers are holding back to buy sub 10 lakh cars as the segment share fell to lowest ever of 51.4% in January to May from 53.4, which is around 200 basis points last year. Okay, so what is the conclusion of this news, Shayan? So people are preferring more of premium products. This could be in the urban markets. Don't know about the rural markets. This could be about the urban markets more, that people are now more preferring these premium products. Okay, so guys, this data cannot be used anywhere as such, but where this can I mean, where we can use this news is whenever you go for an interview and they talk about why premium product is increasing, what is the proof that the premium products are increasing? Let's say when we talk about HUL, TCPL, so that time you can mention this कि सर ये डेटा देखो कंपनी में आया था, पेपर में आया था कि यहाँ पे दिख रहा है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं. So obviously it means that the India is moving towards premiumization and the trend is visible. And I'm not talking, मैं हवे में नहीं बात कर रहा, सर देखो डेटा बात कर रहे बढ़ रहा है. Okay, this is where you can use that. As of now तो ये न्यूज का कुछ यूज तो है ही नहीं. प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात की तो डिक्सन इज वन हु मेक्स टीवी एंड फ्रिजेस, बिकॉज टीवी में कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, ना ही वॉशिंग मशीन इसमें है. एलजी इज कमिंग अप विद एन आईपीओ, वो ध्यान रखना. स्मार्टफोन में देयर इज नो कंपनी लिस्टेड इन इंडिया. कंज्यूमर आके बायबैक में वी नो मारुति इज इन दिस सब 10 lakhs, तो इट विल नॉट ग्रो. महिंद्रा इज ग्रोइंग, वो तो दिख ही रहा है, महिंद्रा इज ग्रोइंग. गाड़ियों का तो हमको पता ही है, बट हाँ, ओवरऑल कंज्यूमर सेगमेंट में दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. So Dixon also has partnership or something like with smartphones, like स्मार्टफोन, हाँ, वो yeah, उसका था आई थिंक, Vivo. शाओमी का था, वीवो, हाँ सॉरी Yeah, वीवो का था, सॉरी वीवो का था ना, शाओमी. yeah. आई थिंक वीवो के फोन तो सस्ते ही आते ना. हाँ, like few of them are like X series and all are above 50,000. The rest of are like within 30,000 only. 30,000, या यस यस. और वो भी था ब्यूटी मार्केट का, क्या था तुमने लिखा, व्हाट वाज द डेटा? Yeah, 8 seconds, sir. So the तो beauty ये market देखिए, हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लाइक इंटरेस्ट नहीं दे सकते, लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में. सॉरी सॉरी. ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स मतलब सेक्टर है, स्टॉक्स वगैरह है, तो उसमें मतलब इन्वेस्ट वगैरह, आई मीन एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव वो बोलूँगा. नहीं समझा नहीं यार. कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट करना मतलब ऐसा. अभी रिसेंट अब ये न्यूज़ देखे कि लाइक पीपल के पास अर्निंग्स वगैरह नहीं है, बट स्टिल पीपल आर लुकिंग अप फॉर द प्रीमियमाइजेशन, सो वन कैन इन्वेस्ट. हाँ, ये रेफ्रिजरेटर है ना, तो वो लिस्टेड नहीं है ना, कोई भी रेफ्रिजरेटर्स में से है वैसे तो नहीं, आई मीन वर्लपूल. नॉट नॉट फॉर पर्टिकुलर, लाइक बजाज वगैरह है, वो लोग ऐसे में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐसा है. उसमें प्रीमियम क्या है? नहीं, आई मीन ये अब ये जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है, तो छोटे कंपनी, आई मीन हाँ, सब बजाज. आया ना इसमें, सब सब कुछ आ गया. और उसके लिए कंपनी पता होनी चाहिए ना कि फर्क क्या है. हाँ, तो इस बारे में मतलब ड्यूरेबल देखना ड्यूरेबल चाहिए. सब आ गया, हाँ, इसमें ओवरऑल है कि सब में ही आ गया. यू कैन यूज इट एवरीवेयर सिंस वी आर ओनली फॉलोइंग ऑटो एंड एफएमसी, तो मैंने बोला इवन द रिटेल अच्छा. पार्ट, हाँ, तो इसके लिए मैंने बोला. बाकी हाँ, या करेक्ट, बाकी सब में भी है. इस ओके. ये ट्रेंड ले सकते हैं. जी. हाँ शायद, सॉरी. Yeah, so the beauty market in India was of the size of $20 billion in 2023, and it is expected to grow at a CAGR of 11%, and it will be reaching around $34 billion in 2028. So the segment will be mainly driven by skincare, which is expected to grow by 13%. या स्किन केयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 35. ब्यूटी में ये पहले भी आया था शायद. ओके, सो गाइस द ब्यूटी सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% टू 34 बिलियन. वो तो ठीक है, $34 बिलियन. सो याद रखना ये चीज कि ना, $34 बिलियन से इट इज ब्यूटी मार्केट साइज. बट अभी ब्यूटी इज वेरी सेग्रीगेटेड कि क्या क्या आता है उसमें, यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इनटू ब्यूटी.
But growth rate मिला ना, it is growth at 10%, so that's totally fine. We can take it as an assumptions when we make financial models. Sir, one more thing, I want to talk about Bosch also. हाँ. It went up by 6% yesterday if we look at the stock. Now, the main reason behind this is we know that Bosch is an auto ancillary company. Hmm. It also makes ABS, like anti-braking systems. So, as we know that government has approved for ABS made it mandatory for 100cc and 125cc as well. Now, due to this, the auto ancillary space will be getting orders worth of 50 to 60 billion, and the major beneficiary here will be Bosch. Bosch has also introduced one more thing, which is motorcycle stability control with for wider motorcycle brands, like wider motorcycle markets. Oh, okay. Yeah. Okay. हाँ guys, जैसे yesterday Bosch was up 6%, है ना? Market tracker समझा ना तुमको, शैन? हाँ भाई. So guys, this was also one of the news that when you make that market tracker, usually you cannot track everything, but when you have it on Excel, तो पे समझता है कि कोई stock बड़ा है. तो what is the reason of that stock increasing? And you can Google it, तो fine, उसको वही मिला, Google से ही मिला होगा. कि why? Obviously हम बात कर रहे थे ABS, which is being mandatory from 26 Jan 26, वो 100cc segment में, and Bosch is the major player in that. That is why मतलब obviously we are not following it, but पता होना चाहिए कि Bosch is the one who makes auto ancillary products, specifically ABS. अभी auto ancillaries में machines भी आते हैं, mirrors भी आते हैं, locks भी आते हैं, but it is specifically into anti-lock braking system ABS, जो which is being mandatory in the motorcycles from 100cc to 125cc. शायद से किसी ने पूछा भी था ABS क्या होता है. Okay. Harsh, no news from your end today? No, sir. Actually, I got fever at night, so woke up very late today. Okay. So sorry, sir. We'll continue from tomorrow. Actually, I'll do it today itself. Whatever the news that I have missed, Sure. I'll Take care. make yeah. Yeah, sure. Take care first. Take care. Okay. Okay, Yes, sir. guys. So we'll meet tomorrow, 10:30, and we will have our modeling. We'll start with financial modeling. So this weekend, probably we'll talk about Excel and some things which can be asked in interviews. We'll start with that. Okay. So, tonight. क्या बोल रहे हैं? सर वो सीवी के बारे में एक बार बता देते ना. अच्छा हाँ, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, बताता हूँ. हाँ, थैंक यू. Okay, guys. Thank you. Have a nice day. See you tomorrow. सर इसके अंदर जो सीवी आपने जो वर्ड में बनाने के लिए बोला है, बस आई हैड डाउट इन दैट. हाँ, पूछो. मतलब कि जैसे जो आप सीवी जैसे भी हम वो फॉलो करेंगे, सो इन वर्ड यू सेड दैट वी हैव टू मेक इट राइट. सो एक बार जरा हाँ. आप बस में बता सकते हैं क्या कि मतलब आप उसको कैसे प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी आज तक वर्ड पे बनाया नहीं है. सो वर्ड हाउ. पे क्या होता है? I'll tell you. ये चयन का सीवी है. ओके. इसने दो पार्ट किया बराबर. हाँ. तो दो पार्ट के लिए व्हाट यू डू इज इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, एंड तुम यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स बना दो. एक ये टेक्स्ट बॉक्स ये हो गया. ओके. दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया. वापस करो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स. ये तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हो गया. ओके. नाउ यू कीप ऑन राइटिंग ऑन दिस. तुमको एग्जाम्पल जो भी लिख रहे हो तुम, ओके. कुछ जैसे मैं एग्जाम्पल ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, रैंडमली लिखता हूँ एक, अब राइटिंग इन ओवर, तो ये इसमें आ जाता है. ओके. अंडरस्टूड. यहाँ पे ऐसा करो, होता है. ऐसा आता है. यहाँ पे तुमको अंडरलाइन चाहिए. अभी जैसे मैंने बोला है यहाँ पे एक लाइन आता है, जैसे इसने किया है. अच्छा, इफ यू वांट टू पुट अ लाइन ऑन दिस, तो वो कैन स्ट्रेट कैसे आएगा? इंसर्ट में जाके, इंसर्ट में जाके शेप्स में एक तुम ऐसा लाइन भी ऐड कर सकते हो इफ यू वांट स्ट्रेट लाइन. अंडरस्टूड. ओके. सो इन दिस टेक्स्ट बॉक्स वी कैन डू एवरीथिंग दैट वी हाँ, और वांट. ये टेक्स्ट बॉक्स तुम कैसे भी हिला सकते हो ना. इफ यू वांट यू कैन मूव दिस एनीवेयर. ओके. वो इजी हो अंडरस्टूड. जाता है. तुमको ये करना है, सेट करना है, तो सब कुछ ये सब टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है. बेटर ये भी चलो. ओके. ओके. श्योर.
तो ये ऐसा ही दो पार्ट उसने किया, तो यू कैन ऑलवेज ये भी कर सकते हो, तुम थोड़ा चीजें बढ़ा सकते हो, ऐसा ये बढ़ा के वो कम कर सकते हो। ओके सर, एडिट थैंक यू करने को सर। इजी हो जाता है ये, और कुछ नहीं। यस, वो वर्ड, वो इसमें क्या होता है ना, कैनवा पे एडिट करने को बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत टाइम लगता है, हाँ, वो बहुत टाइम वर्ड्स ही लगता है। पूरे हिलते हैं, तो फिर ऐसा लगता है वर्ड छोड़ो यार, एडिट ही क्या करना, डाल दो ऐसे, ऐसा होता है फिर। करेक्ट, हाँ। तो चाहिए तो चलेगा। बना के फिर कैनवा पे डाल सकते हो, ऐसा है। हाँ, वर्ड पे राइट, बनाओ, फिर कैनवा पे चाहिए तो उसको एडिट कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड, यस। ओके सर, थैंक यू सो मच। काम। अच्छा शायद सिंस ऑनलाइन यही बोल देता तुमको। या शायद वाई सो बिग, इतना इतना बड़े नाम की जरूरत नहीं है, ओके थोड़ा छोटा करो। व्हाट आई प्रिफर इज राइटिंग दिस इन अ स्ट्रेट लाइन भी चल जाता है, ठीक है। ठीक है ये तो लिंक डाल सकते हो ना तुमको चाहिए तो यहाँ पे। सर, वो मैं ट्राई कर रहा था लेकिन हाँ बट वो नहीं होता है, हाँ कभी वो कभी नहीं नहीं रहा होता था। है, पीडीएफ में ट्रांसफर करके तो नहीं होता है। ओके, हाँ सीएफए इंस्टीट्यूट यहाँ पे, सीएफ उल्टा होता है ना हमेशा, सीएफए यू राइट इट ओवर, दिस इज हाउ यू राइट ना, इंस्टीट्यूट के राइट। नीचे दो लेवल्स ना, ऐसा लिखता है ना, ऐसा हेडिंग एंड देन टू लेवल्स ना। मतलब सेंट जॉन्स को वो पॉइंट नहीं आएगा, इसको पॉइंट्स आएंगे ना दोनों को। ओके सेंट जेवियर्स में क्या किया था, बैचलर्स किया ना। ओके, ये प्रोबेबली आई विल से, इसको ना एक हेडिंग डाल दो कि तुम क्या करते हो, ट्रैक एंड एनालाइज डेली न्यूज, ठीक है। ठीक है और हेडिंग हो गया, नीचे फिर तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ओके ओके ऐसा, क्योंकि अभी तुम्हारा स्पेस है ना, स्पेस बढ़ाना तुमको, तो हाईलाइट ऑन द थिंग्स व्हाट आर यू डूइंग। क्योंकि ओके मैं ना ये सब नहीं पढ़ूंगा तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल एंड एनालाइज क्वार्टरली परफॉर्मेंस, तो उसमें क्या करते हो वो लिखना, डोंट मर्ज इट। ओके और ये क्यों नहीं किया, इट शुड बी राइट अलाइंड, क्या ऐसा क्यों छोड़ दिया सब। ओ, जस्टिफाई अलाइनमेंट, नॉट अलाइन, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, वो कर दूंगा मैं। हाँ, ट्रैक एंड एनालाइज डेवलप, वो भी तो इन ऑटो सेक्टर नहीं किया ना तुमने, वो भी नहीं, तो लिख ऑटो सकते हैं। सेक्टर अभी मतलब नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो भी तो लिख सकते हो ना, वही तो इसके लिए तो ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा ना, प्रॉब्ली वी हैव टू मेक योर सीवी लुक लाइक यू आर यू नो वर्किंग इस पे काम कर रहे हो, मतलब वो तुम्हारा ये इस पे नहीं जाना चाहिए, शुड नॉट कम डाउन कि चलो अच्छा ये जो कर रहे हो ना मेरे को इसी से इस पे बात करनी है। क्योंकि तुमने थोड़ा ये कम कर दिया तो ये फिर इस पे चला जाएगा, एंड यहाँ पे फिर यू आर सेइंग दैट ट्रैकिंग होटल। तो हाँ, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ये होटल्स हॉस्पिटल तुमने ट्रैक किया है, नहीं हाँ, किया तो मतलब probably मैंने ना किया यही था डाल मतलब देना। एक वेबसाइट में। नहीं, ट्रैक अभी कर रहे हो क्या। अभी नहीं कर रहा मैं। हाँ, तो प्रॉब्ली ना इसी का तुम यहाँ पे डाल सकते हो कि वहां पे भी ना तुमने यही ट्रैक किया है, एफएमजीजी ऑटो, अच्छा ऐसा कर सकते हो। ठीक है एंड ये सॉफ्ट कवरेज में डाल सकते हो, होटल ज्वेलरी सॉफ्ट कवरेज, ऐसा विल से सॉफ्ट वीवर नो, ऑल्सो लुकिंग एट, या मे बी वो एआई से देना, एआई से देखना कैसे बात कर, कैसे लिखता है वो। ऑल्सो लुकिंग एट सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटल ज्वेलरी, अल्कोहल, या सब मत लिखो, एक दो ही लिखो जो ठीक है। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। अभी डीआरएसपी तूने बोला, डाइविंग डीप डाइव डीआरएसपी, डू यू हैव द वो रिपोर्ट भी है क्या, किस पे कौन सा डीआरएसपी बनाया तुमने इस पे। हाँ, मैंने एक दो पे मेरे पास था भी, मतलब है, मतलब पर्टिकुलरली तो यही है। चाहिए ना तो एक रिसेंटली कोई कर देना। ओके एक रिसेंट अभी मीशो का ही आईपीओ आ रहा है, देखो आज मीशो का ही आ रहा है आईपीओ, तो उसी का करना, सिंस वी आर आल्सो फॉलोइंग दैट कंपनी, हम वैसे ठीक भी एफएमजीजी फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक मीशो है। का वो करना, उसमें सब मिल जाएगा तुमको एफएमजीजी के बारे में, तुम्हारे रिटेल के बारे में, ठीक है। हाँ हाँ बिकॉज ये क्या होगा ना, तुमने किया है, और अज्यूमिंग आई विल टेल यू नाउ, इफ आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू, तुमने ये सब किया है ना, ठीक है, तुमने अभी इतना गैप था तुम्हारे बीच में, 23 2 साल हो गए, तुमने यहाँ पे बोले डीआरएचपी किया है, और मुझे ना इंटरेस्ट होगा, मेरा लेट्स से वही पर्पज होगा कि तुमको आईपीओ के लिए लेना है, मतलब बताओ इसमें क्या किया है तुमने, हाँ तुम भूल जाओगे क्या किया था। करेक्ट, क्योंकि तुम ये पढ़ के नहीं गए, तुम ये पढ़ के गए थे। हाँ तो फिर क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू ना, न्यू तुमने लिखा है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैं ये कहूंगा कि यार यार इसने लिखा है, चलो पूछते हैं इसको क्या किया इसने। एंड व्हेन यू से नहीं नहीं सर ऐसे ही किया था मैं भूल गया, तो फिर वो वैल्यू नहीं आता ना उस पर। दैट इज वाई जो भी कर रहे हो ना, कि तुमने 2 साल पहले किया है ये, तो ऑब्वियसली भूल गए होंगे, तो अभी भी करके रखना ना, एक यहाँ पे डाल दो ना, चाहिए तो आर्क एडवाइजरी में डाल दो। हाँ ठीक है। बोला ये, एक मैंने मैं बोला ये डाल किया दूंगा है। मीशो करके फिर।
हाँ, तो तुम क्या बोल दोगे कि यू कैन टेल ना कि सर तभी डीआरएसपी नहीं देखा था, क्या क्या देखा है वो पता है, तभी का कंपनी का याद नहीं, बट अभी भी मैंने किया है, वो कंपनी का मुझे याद है। हम्म। ओके, तो जो भी जो लिख रहे हो ना वो याद होना चाहिए, कि लिख के भूल गए ना तो फिर कोई वैल्यू नहीं। बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर इंटरव्यूज, लेट्स से मुझे 5 साल हो गए, ठीक है, तो वी यूज्ड टू ट्रैक द सेम कंपनीज फ्रॉम द लास्ट 5 years। तो अगर मैं भूल गया वो कंपनी के बारे में, या बोला अरे यार सर 2 दिन तभी फॉलो किया था अभी नहीं करता हो, तो फिर तो लिखा ही क्यों है फिर उसमें तुमने? यू शुड नॉट टेल इट एज एक्सपीरियंस ना, भूल गए तुम। और क्वेश्चन कम्स कि इसने कुछ किया ही नहीं है, ये ब्लफ कर रहा है। या ओके, दैट कम्स, एंड इंटर्नशिप में तो ऐसे ही होता है कि ये लोग ब्लफ कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट, डोंट राइट इन इंटर्न, ऐसा है। एंड यहाँ पे भी इंटर्न लिखना है, रिसर्च एंड रिसर्च एनालिस्ट नहीं, इक्विटी इंटर्न रिसर्च, लिखो। इक्विटी रिसर्च इंटर्न, हाँ हाँ, ठीक। रिसर्च इंटर्न अंडर एन एक्स सीनियर एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। ओके। ऐसे सेम ये जो लिखा है ना, इक्विटी रिसर्च इंटर्न एनालिस्ट, यही है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। फिर ठीक ये जो है ठीक। वो नीचे लिखना अंडर एन एक्स सीनियर एनालिस्ट। कॉन्फ्रेंस कॉल्स, सर प्रोजेक्ट्स अलग से लिखना है कि जैसे हेडिंग के एंड में लिख दें, मतलब इससे रिलेटेड, इस हेडिंग के रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट है, ऐसे फिर? हाँ हाँ, ये प्रोजेक्ट्स, शायद सॉरी, हाँ ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिखना है स्किल्स के बाद। ठीक है सर। क्योंकि स्किल्स में तुमने क्या किया सब पढ़ा, वो कहाँ पे अप्लाई किया, ये प्रोजेक्ट में सब अप्लाई किया तुमने, ठीक है। ये ठीक जो है। है मैं एम एस एक्सेल कहाँ पे अप्लाई किया था सर, डेली ट्रैकिंग मैंने अप्लाई किया है। ये डेली ऑटो एंड एफ में डेली मार्केट ट्रैकर लिखना, सिर्फ डेली फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक प्राइस ट्रैकिंग, ठीक है। स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ऑटो एंड एफएमजीजी, ऐसा, ठीक है। फिर ओके। वो इंडस्ट्री एनालिसिस को क्या लिखा था, इंडस्ट्री मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी लिखा है। और इंडस्ट्री एनालिसिस इज नॉट अ स्किल, ये स्किल नहीं होता है इंडस्ट्री एंड कंपनी ओके। एनालिसिस। तो तुमको इसमें लिखना है तुमने कि यहाँ पे तुमने कंपनी एनालिसिस किया है सब कंपनीज के बारे में। वो एम एस एक्सेल ठीक है, वीबीए ठीक है, वीबीए किया है तो हाँ, किया है, बीबीए किया हुआ है। किया है ना, तो ठीक है, वो भी फाइल्स रेडी रखना। फाइनेंशियल मॉडलिंग डाल सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग डाल सकते हो, इट इज अ स्किल्स, ठीक है। ठीक। ये सब नहीं, इंडस्ट्री एनालिसिस मार्केट ट्रैकिंग इज नॉट अ स्किल। एंड फिर ये सबसे तुमने क्या किया, रिपोर्ट लिखना आता है, उससे सबने तुमने ये रिपोर्ट्स बनाए, एक्सेल में ये यूज किया, ओके। फिर एजुकेशन एंड लास्ट में इंटरेस्ट। ओके। इंटरेस्ट से यू कैन यूज सम डिफरेंट वर्ड्स, ये दो फाइन। आज तो विद्या मैम बता देगी वैसे भी क्या करना है क्या नहीं करना है, और स्पेसिफाई हाँ कैसे करना है, बट देन पुटिंग इंटरेस्ट यू कैन पुट सम अदर वर्ड्स एज। एंड थोड़े गैप्स थोड़े कम करना, बहुत गैप्स है सीवी में, वाइट स्पेसेस बहुत है। शुड लुक ठीक। लाइक, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती तुमने ना स्पेस बड़ा बड़ा के सीवी का ही बना है। सर फिर मतलब लाइक आरके एडवाइजरी एंड उसके अलावा कोई रेलेवेंट नहीं एक्सपीरियंस है नहीं, नहीं ये तो। जो गैप है ना, ये गैप, हाँ मैं वो समझ रहा हूँ। फिर हाँ, नीचे से या फिर गैप ज्यादा दिखेगा कि मतलब या नीचे थोड़ा में। हम सीखना चाहें कि यहाँ पे तुमको पॉइंट्स ऐड करने हैं, और दैट विल अच्छा। ओनली लीड, वो तुम जब करोगे तभी लिख पाओगे, क्योंकि इसमें मॉडल्स आएगा, हाँ। फिर उसके बाद तुम्हारे ऑटो ऑटो नंबर्स आ गए, फिर और स्पेसिफिक है ना और भी कुछ, इफ यू थिंक तुमको कुछ लिखना है तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे। सर दिस इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, नहीं तो आजकल एटीएस फॉर्मेट चल रहा है सर, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम वाला। उसमें दे क्या आर है? लाइक, हाँ वो सर पैराग्राफ, हेडिंग एंड पैराग्राफ, जैसे कि हम लोग बाइफरकेट करके स्किल एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो हम्म, जब वो डालते हैं सिस्टम में तो कैश नहीं करता है, तो आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने एटीएस रिज्यूमे निकाला है, दे इज अ फॉर्मेट बाय माइक्रोसॉफ्ट ओनली। सो दैट इज लाइक पैराग्राफ एंड हेडिंग, पैराग्राफ हेडिंग, तो उसमें हाँ स्पेसेस नहीं दिखते हैं सर, वो बहुत स्मूथ आता है। जैसे इन्होंने साइड करेक्ट, में जो लिखा है एजुकेशन सीएफ, वो पॉइंट्स में बहुत गैप्स आ रहे हैं, हाँ तो हाँ वही मैं उससे बोल रहा वो था, बहुत ब्लंडर लग रहा करेक्ट है, करेक्ट, मतलब जैसे साइड में तो एटीएस रेज्यूमे आ रहा है, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम, where they put the keywords and this हम्म, your resume ऑटोमेटिक को निकल के बाहर आता है, क्योंकि these are the selected resumes। एसएमएस या वही मैं उसको बोला कि इट इज हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, पहले स्टार्टिंग में उसको यही हाँ बोला, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, ऐसा लिखेगा नहीं तो तो नहीं समझता है वो। अगर वो गूगल पे करते हैं एटीएस माइक्रोसॉफ्ट रेज्यूमे फॉर्मेट, तो आएगा 4-5 फॉर्मेट ऑटोमेटिकली वर्ड में आता है, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं सर बनाना। मेन तो वही है तुम्हारे सीवी पे, वही हेडिंग ही होना चाहिए, हेडिंग एंड देन एजुकेशन, हेडिंग, इसको भी मैंने हाँ बोला ना, पैरा। यहाँ पे इसने गलत किया, उल्टा हेडिंग सीएफए होना चाहिए, और फिर इसमें सीएफए लेवल 1 लेवल 2 होता है, ऐसा। थोड़े स्पेसेस कम करो शायद, काफी काफी ओके। ज्यादा स्पेस है। एंड ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है ना, बाद में अभी चाहिए तो गोल्डमैन का डाल दो एक हाथ एक्सपीरियंस, कुछ तो रिलेवेंट है वो पॉइंट्स, हाँ अगर ठीक सीवी है। भरना ही है तो।
हाँ भाई, एक डाल दो जो इससे रेलेवेंट हो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब समझ नहीं रहा है क्या किया तुमने। सीवी भरना है तो नहीं होता, भर जाता पूरा, तो ये जरूरत ही नहीं लिखने की। वही एंड वही यू नो व्हाट आई डू इज, ये जो है ना, आई राइट इट ओवर हियर, क्योंकि वो ऐसा ना, हम जब जाते हैं ना सीवी जब स्क्रॉल करते हैं, तो भी सी कि कब कब कहाँ पे उसने काम किया है, ऐसा हाँ, मतलब ये यहाँ पे होता है राइट हैंड, मेरे देखो ना सीवी पे राइट हैंड साइड पे क्या वो दिख जाता है कि अच्छा इधर कितना टाइम था, इधर कितना टाइम था, इधर कितना टाइम था, ऐसा। ओके, हियर इज जस्ट अबाउट योर राइटिंग, राइट में यू राइट अबाउट योर वो, और ये चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स करके डाल देना, वो भी चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं करके आपको मतलब या भेज दूँ। करके सेंड कर, या हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। सैफुर